Hello you all lovely people, welcome back to my channel. I have so many things to tell you about. First of all, I'm very thankful to everyone for liking my previous project, the Pebble Rug. Everybody on my account has been showering their love, their blessings so much. It has been shared so many times. I got my first feature and thankfully I got my first century on my Meraki account. Yay! Yeah. So I am excited about that. And so today's project's inspiration is from one of my favorite DIY YouTubers, Peony Accents. I will mention her YouTube channel in the description box of this project. And you should definitely go and check out her Instagram account and her YouTube channel for the amazing home decor ideas and amazing DIY that she does. So let's not waste time and get started with this project. So for creating this rug, I picked up this nautical rope from Dollar Tree, and each of this is about 7.9 feet long. Before you start gluing your jute cord, आप लोग एक या तो rough placemat या rough newspaper कुछ भी एक अपनी टेबल पे या फ्लोर पे ज़रूर बिछा लें, बिकॉज उससे क्या होगा कि अगर आपका ग्लू वेस्ट भी हो रहा है या फ्लोर पे या फिर कहीं गिर रहा है तो वो डायरेक्ट इस पे गिरेगा, एंड रादर देन स्पॉइलिंग योर टेबल और योर फ्लोर. So, अभी तक मैंने इसमें 18 कॉर्ड्स यूज़ कर लिए हैं, लेकिन अभी इसका साइज इतना बड़ा नहीं हुआ है जितना मुझे चाहिए. आई थिंक आई वुड रिक्वायर अनदर 10 सेट ऑफ कॉर्ड्स जो मैं इसमें ऐड करूँगी. और मेरी ग्लू गन ने गिव अप कर दिया. इट्स ऑलरेडी गिवन अप एंड इट हैज़ टर्न्ड रेड फ्रॉम दिस साइड, एंड अब ये काम करना बंद कर चुकी है. सो आई थिंक आई नीड सम मोर ग्लू स्टिक्स एंड अ न्यू ग्लू गन. So I'll rush now to buy a new glue gun and a box of glue sticks and come back and continue doing the same work. Back with my new glue gun and a pack of glue sticks. So this is how it looks as of now, and इसका साइज़ उतना बड़ा नहीं हो पाया अभी तक जितना मुझे चाहिए. इतना डिस्टेंस अभी भी कंप्लीट करना है मुझे. As I told you that I thought that 27 to 28 ropes are enough in finishing of this rug, and ये मेरी टेबल के साइज़ का हो जाएगा 27 ropes में. So मुझे I think somewhere around 10 से 12 ropes और लगेंगे इसे कंप्लीट करने में. और मैं बहुत ज़्यादा चाह रही थी कि मैं इसे इस वीकेंड पे कंप्लीट कर दूं, बट नहीं हो पाया.